Now we start with the diffraction of light. Another very important topic of the wave optics. Diffraction of light. The phenomena of bending a ray of light through the corners of an obstacle known as diffraction of light. The phenomena of bending ray of light through the corners of an obstacle known as diffraction of light. And the essential condition for diffraction of light is the size of the obstacle should be comparable of the wavelength of the light used. That's why diffraction of sound is very common if we compare with diffraction of light. As you know that wavelength of light in angstrom, while the wavelength of the sound in millimeters. So size of the obstacle in millimeters is very easy to find out, but in case of the light it is slightly difficult. एग्जाम्पल के तौर पे जानो आप कि अगर जैसे कोई एक रूम में बैठा हुआ है और एक बंदा दूसरे रूम में बैठा हुआ है, वो तेज़ बोल के आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिना देखे बातचीत हो सकती है. Why it is so? Due to diffraction of sound. लेकिन देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि diffraction of light नहीं हो पा रहा है, but they can communicate, and that is diffraction of sound. So diffraction of sound is very common if we compare with light. अब जैसे देखो, एक दीवार है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है. They can communicate, ये बात कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं पा रहे हैं. That's why diffraction of sound is very common if we compare with light. ठीक, तो हम लोग एक्सप्रेशन लेके चल रहे हैं diffraction of light through single slit. Single slit के लिए लेके चल रहे हैं, important derivation. So here S is the source of monochromatic light, and it is placed at the focus of the convex lens. Is a narrow slit. AB is a narrow slit. We take another convex lens. At the screen. Screen placed at the focus of the convex lens. Slit to the screen, capital D is the distance, and suppose it is A, or you can take A equals to D also. This point is C, center. The whole light converges at the point O. Okay, now they are the unblocked portions, and they behave as a source of secondary wavelets. Actually, diffraction is a special case of the interference of light. Secondary waves निकलना start हो जाएंगे. As you know that from Huygens principle, each point of the wavefront is a source of secondary wavelets. यहाँ से waves निकलेंगे, superposition होगा, and then we get diffraction pattern. C2A and C2B, each unblocked portion having equal distances. They behave as a source of secondary wavelets. They move in all possible directions.
they reaches at point O without any phase difference, and there is no originating phase difference. There is no originating path difference, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पर है C2A एंड C2B अनब्लॉक्ड पोर्शंस, और यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो ऊपर विदाउट पाथ डिफरेंस पहुंचेगी. दैट्स वाई एट द सेंटर वी गेट ब्राइटेस्ट फ्रिंज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, okay. And now for secondary maxima or for different minimas, we rotate the slit by small angle theta. This time light rays makes an angle theta with CO. P is the point. Now this time they makes an angle theta. That's why intensity will decrease. There is some path difference. How much path difference? If you want to find out, draw normal this one, and is E point. This angle is theta. So total path difference will be BE. Is the path difference. ये टोटल पाथ डिफरेंस आ गया पी पर पहुंचने का. जो रेज पहुंचेंगी तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया बीई, और दिस बीई इक्वल्स टू डी साइन थीटा या ए साइन थीटा. अगर डी लिया तो डी, ए लिया तो ए. ठीक. नाउ कब मिनिमम मिलेगा कब मैक्सिमम मिलेगा इसको एक्सप्लेन करते हैं. कंडीशन फॉर मिनिमा. For minima, if this path difference equals to n lambda, where n should be 1, 2, 3 and so on, not 0. 0 means at the center, but at the center we get brightest fringe like this. Of intensity I naught. We get brightest fringe. That's why n should be 1, 2, 3 and so on. Now, for first minima, n goes to 1. So d sin theta goes to lambda. And we get first minima. We can explain at that time slit dividing into two equal parts. When path difference equals to lambda, at that time slit dividing into two equal parts. Each part provide a path difference of lambda by 2. They cancel out. एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ मिलेगा. They cancel out. That's why we get minima. Now if n goes to 2, d sin theta goes to 2 lambda. At that time, slit dividing into 4 equal parts. Each part provide a path difference of lambda by 2. Pairs cancel out. Again we get minima. Now for third, d sin theta equals to 3 lambda. At that time the slit dividing into 6 equal parts. Each part provide a path difference of lambda by 2. Pairs cancel out and we get minima. That's why for minima the condition is d sin theta equals to n lambda or a sin theta equals to n lambda is the condition for minima in diffraction pattern. Now for maxima,
फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक। डी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 2n-1 और 2n+1 लैम्डा बाई 2, n इक्वल्स टू 1, डी साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2. Slit divided into 3 equal parts, lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2. Each part provide a part difference of lambda by 2. 2 lambda by 2 cancel out. 2 lambda by 2 cancel out, लेकिन एक lambda by 2 बच गया, and is responsible to provide the light. So we get secondary maxima of less intensity. Now, if n equals to 2, d sin theta equals to 5 lambda by 2. Again, same slit divided into 5 equal parts, 4 parts cancel out, 4 lambda by 2 cancel out, 1 lambda by 2 left, which is responsible to provide the light. Again, n equals to 3, d sin theta equals to 7 lambda by 2, slit divided into 7 equal parts, each part provide a part difference of lambda by 2, 6 pairs cancel, 3 pairs cancel out, यानी 3 अभी क्या मिला, 3.5 लैम्डा बाई 3.5 लैम्डा मिला या 7/2 लैम्डा, तो 3 पेयर्स तो कैंसिल हो गए, यानी 6 लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो गए, 1 लैम्डा बाई 2 बचा जो लाइट प्रोवाइड करेगा. इसलिए लगातार इंटेंसिटी डाउन होती चली जाती है, लगातार इंटेंसिटी डाउन होती चली जा रही है. तो ये भी थीटा होगा, सपोज इट इज एक्स एंड इट इज एक्स. ये जो पैटर्न बनना है ये प्लस लैम्डा है, चलो उसको अलग से दिखा देते हैं आपको, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं आप. लैम्डा माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा एंड सो ऑन, and that is I naught. Is the central bright fringe. The central bright fringe. I naught is the intensity of central brightest fringe even. We get brightest fringe. Now, we want to find out the width of the central maxima. Width of the central maxima निकालना है, उसको देखिए आप. Width of the central maxima, यानी हमें 2x निकालना है. सबसे पहले एंगुलर विथ निकालते हैं. If you want to calculate the width of the central maxima, find out the distance between minimas on either side of the central maxima. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, तो विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाएगा. नाउ तो जो एंगुलर विथ है वो कितनी है, 2 थीटा है, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा इज द एंगुलर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. और मिनिमा की बात करें अगर फर्स्ट मिनिमा की, तो डी साइन थीटा क्या है, लैम्डा हो जाएगा, एन इक्वल्स टू 1 लेके चल रहे हैं, तो साइन थीटा मिलेगा लैम्डा बाई डी. थीटा बहुत छोटा होगा, साइन थीटा थीटा बन जाएगा एंड इट इज लैम्डा बाई डी. दिस थीटा इज नोन एज हाफ एंगुलर विथ, थीटा नोन एज हाफ एंगुलर विथ, and 2 theta is the complete angular width.
it is also clear angular width does not depend on capital D. Angular width is independent of capital D. It depends on width of the slit, depends on the wavelength of the light used. It does not depend the distance between slit to the screen, independent होती है. ये एंगुलर विथ आई है और हमें लीनियर विथ भी निकालनी है. वी वांट टू कैलकुलेट द 2x. सो फॉर दैट देखें आप इसको, यहां से अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो tan थीटा मिल जाएगा x/t. इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा. दोनों थीटा को इक्वेट कर दो तो फिर आपको मिलेगा x/d इक्वल्स टू λ/d और x इक्वल्स टू λ/d और 2x इक्वल्स टू 2λ/d is the linear width of the central maxima. Or width of the central maxima, 2x equals to 2λ/d. 2 theta is the angular width, that is 2λ/d. लगातार इंटेंसिटी वेरी करेगी, लगातार इंटेंसिटी वेरी करेगी बाय अ रैपिड रेट, बहुत डाउन होती चली जाती है. दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट. क्लियर? दोबारा देख लो. हियर वी टेक a source of monochromatic light, source placed at the focus of the convex lens. So after refraction, ray become parallel. AB is a narrow slit और इनमें unblocked portion भी है. Now we use another convex lens. At the focus of this convex lens, we place a screen. So light converges on the screen with the help of convex lens. Capital D is the distance between slit to the screen, is the focal length, and small d, small a is the width of the slit. These unblocked portion provide light and they become a source of secondary wavelets. Superposition start. Okay. Now, from C, unblocked portion having equal distances from C to A and C to B. They behave as a source of secondary wavelets. They move in all possible directions. They reaches at O without path difference. That's why at O we get brightest fringe. P is the point on the screen where we want to observe the diffraction pattern. So we rotate the slit by angle, very small angle theta. So rays makes an angle theta with CO. They converge at point P. और अब जो रे A से जाएगी वो सबसे कम डिस्टेंस कवर कर रही है और B से जा रही है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है. कितना पाथ डिफरेंस होगा, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. दिस BE इज द टोटल पाथ डिफरेंस और BE मिलेगा आपको D sin थीटा या A sin थीटा. नाउ अब लेके चल रहे कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. सो कंडीशंस फॉर मिनिमा, दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा. और ऐसा क्यों होगा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. व्हेन n इक्वल्स टू 1, d sin theta इक्वल्स टू लैम्डा. एट दैट टाइम स्लिट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. Each part provide a path difference of λ/2. They cancel out, so we get first minima. When n equals to 2, slit divided into 4 equal parts. Again pairs cancel out. Again we get minima. For maxima, d sin theta should be 2n plus 1 λ/2. When n equals to 1, we get 3 λ/2. 2 λ/2 cancel. 1 λ/2 left, which is responsible to provide the light. So we get secondary maxima. When n equals to 2, it is 5 λ/2. Slit dividing into
4 इक्वल पार्ट्स, 4 लैम्डा बाई 2 कैंसिल आउट, 1 लैम्डा बाई 2 बचा जो लाइट प्रोवाइड करेगा। ठीक, और अब हमें निकालना है विथ ऑफ दिस सेंट्रल मैक्सिमा। तो 2 थीटा एक्चुअली दैट इज द एंगुलर विथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एंगुलर विथ, डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा और साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी। साइन थीटा थीटा बन जाएगा, दैट इज लैम्डा बाई डी। ठीक, लेकिन हमें कंप्लीट निकालना है तो 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा 2 लैम्डा बाई डी। सो इट इज क्लियर angular width does not depend the distance between slit to the screen, it depends only small d as well as lambda. Now और अब लेके चल रहे हैं हम लोग linear width. So from this triangle we take tan theta equals to x by d. थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा भी थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों थीटा को इक्वेट करेंगे तो x अपॉन डी इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी और x इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी और 2x इक्वल्स टू 2 लैम्डा डी बाई डी इज द विथ ऑफ दिस सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, और अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेके चलना है हम लोग इसके ऊपर। तो देखिए न्यूमेरिकल्स, तो ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन अ स्लिट 0.50 millimeter wide. Calculate the distance between first 2 dark bands on each side of the central bright band in the diffraction pattern observed on a screen placed 1.8 meter from the slit. फिर से सुनना क्वेश्चन। A red light of wavelength is given lambda 6500 angstrom from a distant source falls on a slit 0.5 millimeter wide. Calculate the distance between first 2 dark bands, यानी कि हमें 2x निकालना है, in diffraction pattern and capital D is given 1.8 meter. आपको पता है 2x equals to 2 lambda d by d. So 2x equals to 4.68 10 to the power minus 3 meter. इस तरह ये सॉल्व होगा। एक और देखो क्वेश्चन, डिटरमाइन द एंगुलर स्प्रेड बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड first order maxima of the diffraction pattern due to a single slit or with 0.25 millimeter when light of wavelength 5890 angstrom is incident on it normally. देखो क्या क्वेश्चन में है, determine the angular spread between the central maxima and the first order maxima of the diffraction pattern due to single slit or with 0.25 millimeter when the light of wavelength दी हुई है 5890
is the wavelength given, and single slit of width 0.25 millimeter, small d is given, 0.25 millimeter, and they want theta, हाफ एंगुलर विथ निकलवा रहे, या एंगुलर स्प्रेड बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट निकलवा रहे। आपको पता है डी साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, n इक्वल्स टू 1 बता रहे हैं, सो डी साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2 और साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2d, फाइव 3 इंटू 5890 माइनस 10 अपॉन 2, 2.5 10 टू द पावर -5 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे एंगल बहुत छोटा होगा, साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा बन जाएगा और कैलकुलेट करने पे मिलेगा ये 3.534 10 टू द पावर -3 रेडियन, ठीक है। और टोटल एंगुलर स्प्रेड अगर चाहिए तो प्लस माइनस हो जाएगी, टोटल एंगुलर स्प्रेड मिलेगा ये हो जाएगा प्लस माइनस 3.534 10 टू द पावर -3 रेडियन। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर?